Hello everyone, I am Sapna Mudgal, your chemistry mentor. We have decided some important questions by keeping the board exams in mind और इस तरीके से questions की designing की गई है कि it will cover the entire chapter and it will be quite helpful for the preparation of the chapters for the board exams. So let's begin. First we are taking solutions chapter and the solution is very important chapter of physical chemistry. Question number 1, define molality of a solution. If the density of 10% solution of H2SO4 is 1.84 gram per centimeter cube, then calculate the molality of resulting solution. So what is molality? Molality is defined as, number of moles of solute, dissolved per kilogram of solvent. Means how many moles of solute are present in 1 kilogram of solvent, that is known as molality. Now question is, if the density of 10% W by W solution of H2SO4 is this. So whenever we solve the numericals, first of all we write given values. Given values are, they have given us density 1.84 gram per centimeter cube and they have given 10% W by W H2SO4 solution, aqueous solution. So what is the meaning of W by W? It means 10 grams of H2SO4 is dissolved in 100 grams of solution. This is the meaning of W by W, 10%. Percentage is always given for solute and the solute is H2SO4. So 10 grams of H2SO4 is dissolved in 100 grams of solution. So what will be the mass of? So mass of solvent, here mass of solvent is mass of solution minus mass of solute, that is 90 grams. So we have to calculate molality. Molality is mass of solute upon GMM solute, or we can take given mass of solute, GMM solute, mass of solvent. Mass of solvent is in gram into 1000. So we keep the values here. Given mass of solute is 10 grams. H2SO4 solute here is H2SO4, GMM of H2SO4 is 98 into 1000 upon 90. So we solve it. 1000 upon 9. 98 multiplied by 7 by 9, 882. On solving this, you will get the answer in mole per kilogram. So 1000 divided by 88, so naturally it will be 1 point something. If we solve it, it will come out 1 point something in mole per kg. Got it? So molality is number of moles of solute dissolved per kilogram of solvent. This is formula of molality. We put the values and we get the correct answer. The next question is, define molarity of a solution. A solution has been prepared by dissolving 20 grams of NaOH in 250 ml solution. Calculate molarity of resulting solution.
Molarity and molality are very important terms. Molarity, capital M. It is defined as number of moles of solute, dissolved per kilogram of solvent. So, per liter of solvent. Molarity, if we are talking about, it is defined as number of moles of solute dissolved per liter of solution. Here we are talking about molarity, so it's per liter of solution. Now the given values are 20 grams of NaOH, mass of solute. Mass of solute is 20 grams, GMM of NaOH. Na is 23 plus 16 plus 1, it's 40 grams per mole. And calculate, and the volume of solution is 250 ml. So, if we put the values in, first we are supposed to write the formula. For writing the formula, we get marks. Given mass of solute upon GMM solute into 1000 upon volume of solution in ml. So, we put the values. Its given mass of solute is 20 upon 40 into 1000 upon 250. 10. So, its molarity is coming out 2 mole per liter. Got it? Next question is, define solution, discuss various types of solutions. Yes, very important. Solution. What is solution? It is homogeneous mixture of two or more components. So, what is important in solution? That it is homogeneous mixture of two or more components whose composition may vary within certain limits, but it should be homogeneous mixture. Discuss various types of solutions. We can classify the solutions on the basis of phases present in the solution. Basically, the phase of the solution हमारा liquid होगा, solid होगा, gas होगा, that is decided by the phase of solvent. अगर solvent हमारा gas है, तो solution की phase भी क्या होगी? Gaseous होगी. So, on the basis, because solution is of 3 types. What are the 3 types? It is solid solution, liquid solution, and gaseous solution. Solid solution, liquid solution, gaseous solution. Solid solution means solvent is solid. So, it may be further classified into 3 types: solid in solid, liquid in solid, gas in solid. Means these are the solutes and it is solvent. If solvent is solid, then the phase of the solution will be solid. Similarly, liquid solution.
solid in liquid, liquid in liquid, and gas in liquid. And the third one, gaseous solution means solvent is gas, solid in gas, liquid in gas, and gas in gas. Learn the examples of these, which are very important from the multiple choice questions point of view, or filling the blanks. Solid in solid is mixture of gold and copper, gold and silver. If we talk about binary solution, liquid in solid, liquid, mercury in sodium, mercury in zinc, gas in solid, H2 gas in palladium, solid in liquid, sugar dissolved in water, liquid in liquid, ethanol dissolved in water, gas in liquid, O2 dissolved in water, CO2 dissolved in water, solid in gas, camphor in air, camphor in N2 gas, liquid in gas, chloroform in N2 gas in gas, mixture of N2 and O2. Next question is, what is vapor pressure of a liquid? Name the factors affecting vapor pressure. Vapor pressure. Whenever we take a volatile liquid in a container, closed container, then volatile liquid means which changes into vapors at room temperature. So, sometimes there are two processes are taking place. One is evaporation, and in evaporation liquid is converted into vapors, and after some time the vapor particles also collide with each other and start changing back into liquid. उसको हम क्या बोलते हैं? Condensation. In condensation, vapors convert back into liquid. So ultimately, a stage is reached where rate of evaporation becomes rate of condensation, that is known as equilibrium. So what is vapor pressure? Vapor pressure of a liquid, it is the pressure exerted by the vapors at the surface of a liquid, in equilibrium with it at given temperature. Here each and every word is important. Vapor pressure is measured only when the system attains equilibrium. So in definition we have to mention term equilibrium, and it changes with temperature, so it is always calculated at given temperature. So when there is equilibrium, at that case the pressure exerted by the vapors at the surface of a liquid in equilibrium with it at a given temperature is known as vapor pressure of a liquid. So whenever you find vapor pressure value, temperature is always mentioned there. Name the factors. What are the factors which affect vapor pressure? One is nature of liquid. Nature of liquid. Nature of liquid means type of intermolecular forces or the strength of the intermolecular forces existing between liquid molecules. It is strength of intermolecular forces operating. So vapor pressure is inversely proportional to strength of intermolecular forces.
It means if intermolecular forces are strong, vapor pressure is less, because less liquid will convert into vapors, less vapors are formed. So vapor pressure is inversely proportional to strength of intermolecular forces. And the second is temperature. Temperature, if we increase the temperature of a liquid, more and more molecules have higher kinetic energy. They convert into vapor phase. More vapors are formed, so vapor pressure is high. So we can say vapor pressure is directly proportional to temperature. So vapor pressure, it is the pressure exerted by the vapors at the surface of a liquid in equilibrium with it at a given temperature, and there are two factors, one is nature of liquid and other is temperature. Next question. Define Raoult's law for a solution containing two volatile liquids. Listen, there are two definitions. One is Raoult's law for a solution containing non-volatile solute, and here we are talking about two volatile liquids. See, when we take two volatile liquids, means both change into vapors. Suppose this is liquid B, then vapors of both liquid A and B are formed. Because both are, so vapors of both are formed. So the total pressure which is calculated here, that is sum of partial pressures of liquid A and liquid B. Suppose this is molecules of liquid A, this is molecule of liquid B. देन बोथ द लिक्विड्स, दोनों ही लिक्विड्स किस में चेंज हो रहे हैं, वेपर्स में हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो टोटल प्रेशर आएगा वो उनके पार्शियल प्रेशर्स का क्या होगा, सम होगा. तो टोटल प्रेशर इस केस में दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. पार्शियल प्रेशर मीन्स कि पर्टिकुलर लिक्विड की वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं वो क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर. तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, partial vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction of component in liquid phase. कि उस component का, for example, PA is directly proportional to chi A और PA equals to P naught A chi A. Partial vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction of a component, or we can say partial vapor pressure of a component is a product of vapor pressure of pure component in a solution, vapor pressure of pure component and mole fraction of component in a solution. Similarly, PB is directly proportional to chi B. Chi B is mole fraction of liquid B and PB equals to P naught B chi B. So this is Raoult's law for a solution containing two volatile liquids, that vapor pressure, partial vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction of component in liquid phase. I hope it is clear to you. Next question. How does vapor pressure of a solution change on addition of a non-volatile solute in it? जब किसी volatile liquid में
हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर में क्या चेंज आता है। जैसे आपने सपोज आपने एक कंटेनर में वाटर लिया, दिस इज प्योर वाटर। प्योर वाटर मीन्स केवल वाटर के ही कंपोनेंट्स हैं एंड इट इज सपोज दिस इज लिक्विड A, सो इट्स वेपर प्रेशर इज P0A। अब सेम अमाउंट में सेम टेम्परेचर में अगर आपने इसमें क्या डाल दिया, हियर इट्स मोल फ्रैक्शन P0A व्हेन Ka इक्वल्स टू 1। एक ही प्योर कंपोनेंट है तो प्योर कंपोनेंट में उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, सपोज वाटर में आपने सुक्रोज डाल दिया या वाटर में आपने क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया। दिस इज A, दिस इज B। दिस ग्लूकोज इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स कि इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो वेपर्स अभी भी किसकी बनेंगी, A की ही बनेंगी, B की वेपर्स नहीं बनेंगी। तो बट वी ऑब्जर्व यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा विच इज, और वी कैन शो इट बाय PA, इंडिकेट PA इज ऑलवेज लेसर देन P0A। क्यों? तो वेपर प्रेशर of a solution change on the addition of non-volatile solute in it. So our answer is on addition of non-volatile solute to a volatile solvent, vapor pressure of solution decreases, vapor pressure of a solution decreases because mole fraction of volatile component decreases in solution. So PA is equal to P0A Ka. In pure solvent Ka equals to 1, but in a solution Ka is lesser than 1. So when Ka decreases, because here in solution Chi A plus Chi B equals to 1. So naturally Chi is lesser than 1. As we add more and more non-volatile solute, mole fraction of non-volatile solute increases, mole fraction of volatile solvent decreases. Chi A decrease होगा तो vapor pressure of solution भी क्या होगा, decrease होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, if we add non-volatile solute, then vapor pressure of a solution becomes lower than vapor pressure of pure solvent. This is very important, generally asked, what happens when it is added. Now next, write 4 differences between ideal and non-ideal solutions. On the basis of Raoult's law, solutions, how do they behave when we mix 2 liquids to form a solution? How do they behave? What are the changes in enthalpy? What are the changes in volume? On the basis of that, we have categorized that solutions are of 2 types, ideal solution and non-ideal solution. Ideal solution and non-ideal solution. So main point of ideal and non-ideal solution is, ideal solution, first thing, what is the first thing? What is ideal solution? A solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration is called ideal solution. A solution
which obeys Raoult's law over the entire range of concentration. What is the meaning of obeys Raoult's law? It means PA is equal to P naught A chi A, PB is equal to P naught B chi B. Second point, why do they behave ideally? Because they behave ideally only if we mix the two components, then their interactions are similar to pure components. Means we can say AB interactions are similar to AA and BB interactions. Means interactions means the magnitude of forces which are operating. दो liquids को operate करने पर अगर उनके बीच में forces का जो magnitude है वो same forces का magnitude में कोई change नहीं आ रहा है, ना तो वो strong हो रहे हैं ना वो वीक हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि फील ही नहीं हो कि हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया है, देन दैट सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली. इस केस में एंथैल्पी चेंज अगर हम मिक्सिंग करेंगे, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0. मीन्स इफ वी मिक्स द टू कंपोनेंट्स देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी. ना तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज होगा. फोर्थ थिंग, WV mixing is also equal to 0. Means ना तो volume, if we have mixed 20 ml of each liquid, then the total volume will be 40 ml. 40 ml 20 mix किया है तो 40 ml रहेगा, ना 40 से कम होगा ना 40 से ज़्यादा होगा. Now we come to non-ideal solution. Non-ideal solution means do not obey Raoult's law over entire range of concentration. Over entire range of concentration. Means PA is not equal to P naught A chi A and PB is not equal to P naught B chi B. Why is it so? Raoult's law क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? The main reason is AB interactions are different than AA and BB interactions. अब interactions different means दो लिक्विड्स को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो उनके दोनों लिक्विड को मिक्स करने में अब उनके बीच में जो फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं वो फोर्सेस या तो बहुत वीक हो गए हैं या बहुत ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. मींस मैग्नीट्यूड उनका क्या हो गया? चेंज हो गया. अगर फोर्सेस वीक होंगे तो वेपर्स पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट का इंक्रीज हो जाएगा और अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए तो वेपर्स दोनों की कम बनेंगी एंड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट विल डिक्रीज. इस केस में डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 मीन्स या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी. सो प्रोसेस में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. एंड द फोर्थ वन, delta V mixing is also not equal to 0. Means if we take 20 ml of each liquid, then the total volume is not 40 ml. 40 ml से थोड़ा कम होगा या 40 ml से ज़्यादा होगा. So these are the two important points, the four important points regarding ideal solution and non-ideal solution.
We can give examples. Ideal solution is, example is solution of benzene and toluene. These are of two types: non-ideal solution with positive deviation, non-ideal solution with negative deviation. Come to the next one. What do you mean? What do you mean by non-ideal solution with positive deviation and negative deviation? So again, the part of this, positive deviation and negative deviation. Non-ideal solution with positive deviation, non-ideal solution with negative deviation. Positive deviation means partial vapor pressure, उसी से रिलेटेड है, सेम पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे. हियर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. PA is greater than P naught A chi A, PB is greater than P naught B chi B. Why is it so? ऐसा क्यों है? पार्शियल वेपर प्रेशर हर कंपोनेंट का जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए उससे ज़्यादा है. तो PA is greater than, why is it so? क्यों? क्योंकि AB interactions are weaker. This is important. पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो AB इंटरेक्शंस क्या होंगी? वीक होंगी. AB इंटरेक्शंस आर वीकर देन AA एंड BB इंटरेक्शंस. अब इंटरेक्शंस वीक होंगी तो डेल्टा H मिक्सिंग इज पॉजिटिव डेविएशन है, तो ध्यान रखिए सब कुछ क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा H मिक्सिंग भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव का प्रोसेस मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस है. इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इंटरेक्शंस आर वीक, so the liquid molecules will absorb heat from the solution. और इस केस में टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस. डेल्टा V मिक्सिंग दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. आपने 50-50 ml लिया है तो आप देखेंगे कि जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द टू, क्योंकि अब आपने जब उनको मिक्स कर दिया तो पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या हो गए? दूर दूर हो गए, तो इंटरेक्शंस क्या हो गई? वीक हो गई. एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ नॉर्मल हेप्टेन एंड इथेनॉल. These are the examples of non-ideal solution with positive deviation. Next come to non-ideal solution with negative deviation. इसमें in this case PA is lesser than P naught A chi A, PB is lesser than P naught B chi B. Means partial vapor pressure of each component is lower than the partial vapor pressure expected from Raoult's law. ऐसा क्यों हुआ? In this case, AB interactions are stronger. Why it is showing negative deviation? Because AB interactions are stronger than AA and BB interactions. Negative deviation, so keep in mind delta H mixing is negative. Negative means process is exothermic, heat is released. It is showing
When strong bond is formed between two liquid molecules, energy is released in the form of heat. Exothermic, so temperature of solution, temperature of solution increases. So sometimes question is asked, what happens to the temperature of solution if the two components are mixed? What are the two components? Suppose they ask acetone and chloroform is mixed. Acetone and chloroform form non-ideal solution with negative deviation. So in that case, the temperature of the solution will increase. डेल्टा V mixing is again negative. आपने 50-50 ml ऐड किया, but the resulting volume of the solution is always lesser than 100 ml, क्योंकि अब particles एक दूसरे के क्या आ गए हैं, close आ गए हैं, because interactions are strong, so resulting volume is always lesser than the sum of the volumes added. They have graph between vapor pressure and mole fraction. They will show negative deviation and it is positive deviation. Example is mixture of HNO3 and water, mixture of acetone and chloroform. Next, define azeotropes. Discuss the various types of azeotropes by giving examples. Azeotropes, what are azeotropes? Azeotropes are formed by non-ideal solutions. Azeotropes are constant boiling mixtures which have same composition in vapor phase and liquid phase. Means वो एक particular composition आता है जिसमें जो mole fraction liquid phase में होता है वो ही mole fraction component का vapor phase में होता है. So it is a constant boiling mixture having same composition in liquid phase and vapor phase. Components of an azeotrope or azeotropic mixture. Azeotrope cannot be separated by fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब पॉसिबल होता है? जब दो कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो. बट यहाँ पे अगर इफ इट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सेम है. सो कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय fractional distillation. Now non-ideal solutions are of two types. What are the two types? Positive deviation and negative deviation. So azeotropes are of two types. These are also of two types. Minimum boiling azeotropes and maximum boiling azeotropes. See, what is the relationship between boiling point? Boiling point is inversely proportional to vapor pressure.
If vapor pressure is more, boiling point is less. If vapor pressure is less, boiling point is more. So in this case, minimum boiling azeotrophs are formed by non-ideal solution with positive deviation. पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा. नॉन आइडियल सॉल्यूशन are formed by non-ideal solution with positive deviation. Positive deviation. So vapor pressure is maximum and boiling point is minimum. Boiling point is minimum. Example is 5% H2O plus 95% ethanol. So mixture of water and ethanol, if we do fractional distillation, we get 95% ethanol, 5%. इससे ज़्यादा प्योर इथेनॉल को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं, 100% इथेनॉल इसीलिए नहीं ऑब्टेन होता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, बिकॉज 95% इथेनॉल and 5% H2O becomes azeotrope, and then the components cannot be separated by fractional distillation. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से सॉल्यूशन बनाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन. इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर इज मिनिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम. And example is 36% HNO3 and 64% water. This is azeotropic mixture. Next, discuss the various types of, now we come to the, we have discussed about vapor pressure, non-ideal solution, ideal solution, molality. Next is, we come to next part of this topic is colligative property. Discuss the various types of colligative properties. So first, colligative properties. What are colligative properties? Colligative properties. Properties of the solution. Properties of the solution which depend upon number of solute particles present in solution and not upon their nature. Very important definition, colligative properties. Properties of the solution which depend upon number of solute particles present in solution. Means solute particles के नंबर पे डिपेंड कर रहा है और उनके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, colligative properties. There are 4 colligative properties.
There are 4 colligative properties. What are these? First is relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. Second, elevation in boiling point. Third one, depression in freezing point. And the fourth one is osmotic pressure. See, osmosis is not a colligative property, it is osmotic pressure. Osmotic pressure is colligative property. So, relative lowering of vapor pressure. Again, relative lowering of vapor pressure is a colligative property. Vapor pressure is not. Elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Next, explain the following terms: molal elevation constant, molal depression constant, reverse osmosis, osmosis, and osmotic pressure. So, first we are taking molal elevation constant. Molal elevation constant किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kb. आपने देखा होगा दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा Tb. चेंज इन टेम्परेचर T2 minus T1. Delta Tb is equal to Kb into m. Here delta Tb is elevation in boiling point, Kb is molal elevation constant, and m is molality. If m, molality of solution is 1 mole per kg, in that case delta Tb is equal to Kb. So what is delta Tb? It is elevation in molal elevation constant. It is elevation in boiling point, elevation in boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kilogram of solvent. या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोल पर केजी. Kb की जो वैल्यू है वो भी अगेन इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट. सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करती है. इसकी यूनिट क्या होगी? इफ यू टॉक अबाउट यूनिट ऑफ Kb is equal to delta Tb upon molality. Delta Tb टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन. दिस इज मोल पर केजी. सो इट इज केल्विन. सो वी कैन राइट केल्विन मोल इनवर्स केजी इन Kelvin kilogram per mole. So it is mole per kg, Kelvin kilogram per mole. Same is second one is molal depression constant. Molal depression constant is denoted by Kf.
सर सर धीरे कर। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप मत करो, आप अभी मत करो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग चल रही है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf delta Tf equals to Kf into m. If m equals to 1 mole per kg, delta Tf equals to Kf. So again, what is its definition? It is depression in freezing point when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kilogram of solvent. 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kilogram of solvent. Again, unit is same, Kelvin, kilogram per mole. Again, the value of Kf that depends upon nature of the solvent and not upon solute. For example, Kf for water. Kf for water is 1.86 Kelvin kilogram per mole. Whether we dissolve NaCl in it, sugar in it, glucose in it, its value, Kf value, that will depend upon nature of solvent and not on the nature of solute. Third is reverse osmosis, again very important topic. Reverse osmosis. Reverse osmosis, RO. This is semi-permeable membrane. This is pure water, this side. This we have taken sea water or solution. In normal condition, if pure water and sea water, one is dilute, other is concentrated. Sea water में dissolved salts होते हैं, तो sea water कैसा होता है? Concentrated होता है. प्योर वाटर, अगर नॉर्मल कंडीशन में आप दोनों को सेपरेट करते हो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम प्योर वाटर टू सी वाटर. लेकिन अगर यहाँ हम कंडीशन अप्लाई कर दें, क्या कंडीशन? प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर यहाँ हम प्रेशर अप्लाई करें जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, उस केस में we observe solvent molecules start moving from sea water to pure water against the direction of osmosis. कि water molecules की जो movement होगी वो osmosis के क्या होगी? Opposite होगी. So what is reverse osmosis? If pressure greater than osmotic pressure is applied on solution side, solvent molecules move from solution to pure solvent against the direction of osmosis. But this phenomenon will take place only when pressure greater than osmotic pressure is applied. So this is important thing, when pressure greater than osmotic pressure is applied. What is its application?
इट इज़ यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर बहुत सलाइन होता है, तो सी वाटर में से ड्रिंकिंग वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज osmosis and osmotic pressure. What is osmosis? Osmosis. Osmosis is, it is phenomenon of movement of solvent molecules from dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane. देखिए ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी और वो भी किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज phenomenon of movement of solvent molecules from dilute solution to concentrated solution through semi permeable membrane. Through semi-permeable membrane. What are the two types of osmosis? Endosmosis and exosmosis. Next, osmotic pressure. Osmotic pressure is denoted by pi. It is the minimum excess pressure which must be applied on solution side to prevent the phenomenon of osmosis. It is the minimum excess pressure which must be applied on solution side to prevent the phenomenon of osmosis. अगर osmosis हो रहा है और हमें उसको stop करना है तो solution side में हम जो excess pressure धीरे धीरे increase करेंगे और वो excess pressure जिसपे कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड पाई इक्वल्स टू MRT. It depends upon molarity of the solution and it also depends upon temperature of the solution. Now next question is 0.52 grams of glucose has been dissolved in 80.2 grams of water. Calculate elevation in boiling point of a solution, and Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. So what are the values here? Glucose is our solute और water क्या है? Solvent है। आपको elevation in boiling point निकालना है तो given सबसे पहले हम लिख लेते हैं given values। क्या क्या आपको given है? Given है आपको mass of solute Wb which is 0.52 grams. ग्लूकोज का मोलर मास क्या होता है? GMM ग्लूकोज इज C6H12O6। अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो इट कम्स आउट 180 ग्राम पर मोल। सॉल्वेंट आपको गिवन है 80.2 ग्राम्स WA, दिस इज सॉल्वेंट का मास है।
और आपको कैलकुलेट करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और के बी आपको गिवन है, के बी इज 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इज के बी, मोलालिटी इज given mass of solute GMM solute into 1000 upon mass of solvent, mass of solvent in grams. So put the values, it is 0.52, this is 0.52, GMM solute is 180, 1000 upon 80.2. If you solve it, it comes out 0.0018, 0.0018. This is delta TB. आपको निकालना, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा TB इज T2 minus T1. What is T2? T2 is boiling point of solution एंड T1 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 273, सो 0.0018 इक्वल्स टू T2 इज, हमें कैलकुलेट करना है, T1 इज 273.15, सो T2 इज 273.15 प्लस 0.0018, so 273.1518 केल्विन। तो जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट। नेक्स्ट इज 1.02 grams of a non-electrolyte solute dissolved in 50 grams of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. Find the molar mass of the solute Kf. Again, based on colligative property, given values, mass of solute Wb is 1.02 gram. It is 1.0 gram. It's 1.0 gram. 1 gram of non-electrolyte solute, mass of solvent Wa is 50 grams, and delta Tf, depression in freezing point कितना given है आपको, 0.40 Kelvin, and Kf for benzene, बेंजीन के लिए आपको Kf गिवन कितना है, 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। फॉर्मूला हमारा है डेल्टा Tf इक्वल्स टू Kf इंटू एम मोलालिटी, Kf MB हमें यहाँ पे, या GMM या मोलर मास जो भी आप बोलते हैं उसको, MB हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। WB मास ऑफ सॉल्यूट, GMM of solute या MB, WA in grams into 1000. WB is mass of solute in grams, WA is mass of solvent in grams, MB is molar mass of solute. Substitute the values. Kf is 5.12, delta Tf is 0.40, Wb is 1 gram, Wa is 50 grams into 1000. Decimal cancel, 20. So MB comes out 512 divided by 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10 gram per mole. So this is
molar mass of non-volatile solute. Molar mass of we can calculate it with the help of any colligative property, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point और osmotic pressure. अगर हमें मोलर मास चारों में से किसी एक में से डिटरमाइन करना है तो इम्पॉर्टेंट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर. इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ऑस्मोटिक प्रेशर ही क्यों हम प्रेफर करते हैं? एक तो रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है, तो प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह जो कंपाउंड्स होते हैं वो हीट करने पर डिकम्पोज हो सकते हैं, तो उनको ना हीटिंग करनी है ना फ्रीजिंग करनी है हमें. एंड मोलैरिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी. रूम टेम्परेचर पर होगा, मोलैरिटी यूज होगी, कोई हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी. दैट इज वाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड. Next, it is based upon vapor pressure. Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23 mm mercury. 50 grams of urea is dissolved in 850 grams of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering of vapor pressure. So again, what values are given? Given values is vapor pressure of pure water. Solvent P0A is 23.8 mm mercury. WB mass of solute is 50 grams. Molar mass of solute which is urea. यूरिया का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल. अगर आप N14H1 कैलकुलेट करेंगे, पहली वैल्यूज पुट करेंगे. मास ऑफ सॉल्वेंट इज 850 ग्राम्स. आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज PA, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल्स टू Xi. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला है, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो सबसे पहले हमें PA कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute. PA is equal to P0A chi A. Chi A. PA is equal to 23.8 into chi A is number of moles of water upon number of moles of water plus number of moles of urea. So let's calculate chi A first. Chi A equals to number of moles of, this is water is 850 divided by 18. 850 divided by 18 plus 50 upon 60. Put the values. PA equals to 23.8 into 850 by 18 on 850 upon 18 plus 50 by 60. Put the values 23.8, solve it, 850 upon 18. If you solve it, it comes out, you put the value 0.98. So it is 23.32 mm mercury. Chi A comes out 0.98, so it comes out 23.38 mercury. And then you have to calculate relative lowering RLVP. RLVP is equal to chi B,
and chi b, as you can see that, and 1 minus chi b, 1 minus 0.98, so it comes out 0.02. Or you can calculate by putting the values P naught A, you have PA divided by P naught A, answer will come out same, RLVP, relative lowering of vapor pressure, 0.02. Next is, what is want of factor? Find the value of want of factor for following compound assuming complete dissociation of salt. Want of factor क्या होता है बेटा? Want of factor जब हमने देखा कि कुछ सॉल्यूट्स ऐसे हैं जिनको अगर हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो उनका और मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो ऑब्जर्व मोलर मास है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेटेड मोलर मास. जैसे स्पेशली, और ये किस केसेस में आ रहा था, जो सॉल्ट की डिसोसिएट या एसोसिएट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. कुछ सॉल्ट्स होते हैं जैसे NaCl हो गया, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एसिड्स हैं, जब इनको सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करते हैं तो दे हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो डिसोसिएशन. एंड सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर एग्जाम्पल benzoic acid, phenol etc., they have a tendency to undergo acetic acid. ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या बनाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं. तो वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ रही थी ऑब्जर्व मोलर मास में और कैलकुलेटेड मोलर मास में. तो उसके लिए वांट ऑफ ने एक फैक्टर दिया, वांट ऑफ फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय I. वांट ऑफ फैक्टर I is a ratio of normal molar mass upon observed molar mass. Normal molar mass upon observed molar mass, or it is observed colligative property upon calculated colligative property, or I is total number of particles after dissociation or association upon number of particles, total number of particles before association or dissociation. तो जहाँ पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होगा तो I is equal to 1 in case of आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल केस है जैसे जब आपने ग्लूकोज डाला है, सुक्रोज डाला है, यूरिया डाला है, जो कि ना तो डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं. I is greater than 1 in case of dissociation. अगर पार्टिकल्स के डिसोसिएट होने की टेंडेंसी है, I is lesser than 1 if particles have association. तो जैसे कोई भी NaCl लिया आपने तो NaCl जो क्या होगा, डिसोसिएट होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ज़्यादा होंगे और बिफोर कम होंगे, तो I is greater than 1. Now we come to this. In case of NaCl अगर कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट होके क्या देगा, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन. तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज 2, Mp इज इक्वल टू 2. Mp मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बने हैं. और डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला होता है 100% डिसोसिएशन मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 1, अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइनस 1. तो अगर 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू Mp इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन. तो NaCl में I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज 2 फॉर NaCl.
सेकेंड केस आप बी ले रहे हो, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, तो आई इज 1. K2SO4, K2SO4 will dissociate as 2K plus SO4 2 माइनस. मतलब एक हम एज्यूम कर रहे थे एक पार्टिकल डिकम्पोज होकर 3 बनाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 होंगे, तो आई की वैल्यू 3 होगी. देन डी इज K4 FeCN होल 6. दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे डिकम्पोज होंगे? इट इज 4K प्लस FeCN होल 6 4 माइनस. तो 4 + 1, इसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 5. सो वैल्यू ऑफ आई विल बी 5. दिस क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड इन MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई? तो जितना अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो जितने पार्टिकल्स, एक पार्टिकल डिकम्पोज होके जितने पार्टिकल्स देगा वो MP कहलाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड दैट इज इक्वल टू आई, दिस वांट ऑफ फैक्टर. Now, determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 mg of K2SO4 in 2 liters of water at 25, assuming that it is completely dissociated. बेटा जहाँ पे भी complete dissociation या complete association या dissociation या association का word आएगा, it means वहाँ पर आपको फॉर्मूले में want of factor की वैल्यू को इंट्रोड्यूस करना है. तो डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे हमको ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करना है. प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट इज 25 mg. हमेशा मास ऑफ सॉल्यूट को हमें ग्राम्स में लेना है, 2 × 10⁻³ ग्राम्स. K2SO4 in 2 liters, volume of solution is 2 liters of water. टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, तो इट इज़ 298 केल्विन. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट K2SO4. पोटेशियम इज 39 × 2 + 32 + 16 × 4. 78 + 32 + 64, 6, 14, 7, 10. It is 174 ग्राम पर मोल. आई की वैल्यू कंप्लीट डिसोसिएशन है, आई इक्वल्स टू MP. अभी आपको बताया K2SO4 में MP क्या होगा? 3. K2SO4 विल डिसोशिएट एज 2K प्लस SO4 2 माइनस. तो जितने पार्टिकल्स, एक पार्टिकल डिसोशिएट होकर 3 पार्टिकल दे रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी है? 3. तो फॉर्मूले में यहाँ पे हम आई की वैल्यू पुट करेंगे IMRT. M इज मोलैरिटी. मोलैरिटी हो गई आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर RT. पाई इक्वल्स टू आई इज 3. इट इज WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन RT. 3. WB is 25 × 10⁻³ into 0.083 R liter atmosphere मोल 298 upon MB is 174, वॉल्यूम इज 2. इसको आप सॉल्व करेंगे पाई को, सो इट कम्स आउट 75 × 10⁻³ into 0.083 into 298. 298 को 2 से कैंसिल करेंगे 1, 2 1s are 2, 2 4s are 4, 149 upon 174. On solving this, you will find the value. It comes out 4.5 × 10⁻³ atmosphere. 4.5 something, 4.55 × 10⁻³ atmosphere. If we solve it,
It comes out 5.33 into 10 to the power minus 3 atmosphere. Next question is, define Henry's law, derive its expression and discuss application. Yes, this is again important topic, Henry's law. Henry's law is related to the solubility of gases in a liquid. It states that solubility of a gas in a given liquid is directly proportional to partial pressure of the gas above solution, above the surface of liquid, above the surface of a liquid कि अगर आप प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर कम अप्लाई, दैट इज़ वाई सोडा वाटर बॉटल्स आर फिल्ड एट वेरी हाई प्रेशर. सो पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी को हम किसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई गैस और P इक्वल्स टू KH काई गैस, where KH is Henry's law constant, which is not a universal constant. Its value depends upon the nature of the gas and temperature. Applications, if we talk about applications, first, soda water bottles are filled at high pressure. Soda water bottles are filled at high pressure to increase solubility. Of gas in liquid. Second, scuba divers which carry oxygen cylinder, they carry oxygen cylinder that is diluted with helium gas, because for helium gas KH value is very high. If KH is very high, the solubility is come. If KH value is very high, then the solubility of the gas is low. Oxygen cylinder carried by scuba divers is diluted with helium. So these are the some important applications of Henry's law. I hope you liked the video. Please write comments. What else you expect from this video? What are the changes we can make in video? What are the topics you want to discuss? And please share and subscribe if you like it. Thank you. Best wishes for your board exams. Thank you.